ठीक है, थर्ड यूनिट है ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी कंटेंट लिख देना इसमें, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 20। 20 में 20.1 एंड 20.2, 6 एंड 20। चैप्टर नंबर 6 और 20 रेफर करना है विथ फ्रॉम डॉन बुश। रेफरेंस बुक इसके लिए रहेगा। देन चैप्टर 14, 15 एंड 20.6 फ्रॉम सैल्वाटोर। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स हैं ओपन इकॉनमी में। चैप्टर नंबर 6 पूरा करना है। 20 में 20.1 एंड 2, 14, 15 एंड 20.6 and the weightage for open economy will be 2 complete question, that is 30 marks। ठीक है, ओपन इकॉनमी 2 कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। टू कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ start with this chapter number 6. Chapter number 6, heading for chapter number 6 is international linkages। chapter number 6, international linkages। ठीक है, चैप्टर 6 है, 20 है, 14, 15 और 20.6। 2 रेफरेंस बुक है, वन सैल्वाटोर एंड अदर इज डॉन बुश। तो डॉन बुश का चैप्टर नंबर 6 पहले ये लिख दिया ना। चैप्टर नंबर 6 इज इंटरनेशनल लिंकेज। इंटरनेशनल लिंकेजेस। ठीक है, ये पहली क्लास बेसिक्स के लिए, ओपन इकॉनमी के बेसिस के लिए। some basic terms. In that basic terms start with balance of payment। start with this term balance of payment। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स पहले यहाँ समझेंगे। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, what is flexible exchange rate, within that managed floating है। तो there are certain basic terms in balance of international linkage। First of all, balance of payment is a systematic record and it records what? It records all economic transactions between a resident of one country and resident of rest of world। Suppose if you want to draw balance of payment for Indian economy, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर इंडिया विल सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस बाय इंडियन रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अब आप ये सोचो कि इंडियन रेजिडेंट का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है। इफ वी एक्सपोर्ट गुड्स देन वी विल बी रिसीविंग फॉरेन एक्सचेंज, तो वो रिसीव्ड साइड में चला जाएगा। वीओपी प्रिपेयर नहीं करना है, आपको कंसेप्ट से मतलब है। एंड इफ वी इंपोर्ट गुड्स देन वी हैव टू मेक पेमेंट्स। सिमिलरली देयर कुड बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो वो सेकंड इंफॉर्मेशन में चला जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो राइट साइड आ जाएगा। देयर विल बी ट्रांसफर इनकम पेड एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, सिमिलरली इंडियंस कुड बी वर्किंग outside, so their transfers included here। investment income earned from abroad, investment income paid to abroad। so in the current account of balance of payment there are 4 transactions: goods, services, transfers and investment income। goods, services, transfers and investment income। so when we say current account is in deficit, it means what? Current account is in deficit, it means the current account transaction of payment side is more as compared to receipt side।
So current account includes transaction of goods, services, transfers and investment income. And the capital account will basically involve sale and purchase of assets. Suppose if Indian firm purchase land outside India, then that will be considered as investment outside India. If foreigners purchase the land in India, you have to focus simply on the flow of money. So if money is flowing in, it is, if money flows out, it is payment side. So whenever there will be receipts and payment, always remember there will be involvement of foreign exchange, because these receipts and payments are in terms of foreign exchange. So when you say balance of payment is in deficit, it means what? Balance of payment is in deficit. Balance of payment is in deficit, it means the payment side is more and the receipt side is less. But in accounting sense, balance of payment is always balanced. It is always based upon the double entry bookkeeping system. So in accounting sense it is always. So if in accounting sense it is always balanced, why we say that a country is facing BOP problem? Country is facing BOP problem because there are two different type of transaction. One is autonomous, other is accommodating. Autonomous means those transactions which are independent from BOP consideration. An importer will simply not reduce import because India is facing BOP problem. उसका behavior independent है. Whether there will be deficit or surplus, his decision is independent of that. Similarly, an exporter decision is also independent from that. Now question is, if the autonomous payment is more and the autonomous receipts are less, then you have to make payment in terms of dollar and you are getting less dollar. So it simply implies that in market demand for dollar is more as compared to supply of that dollar available. So who will bridge that gap? Central bank. And how central bank will bridge that gap? Demand for dollar is more, supply of dollar in market is less. So you said central bank will bridge that gap. How central bank will do it? By what? By selling the reserve if the reserve is available to central bank. If reserve is not available, then central bank will have to borrow. But when you borrow, where it will be entered in BOP? Borrowing को enter कहाँ पे करेंगे, किस साइड करेंगे, ये बताइए उसे. You have to simply think about the flow of money. Money is coming in or money is going out? It's coming in, so it is added into receipt side, so the supply of dollar will increase. But why RBI borrowed? RBI borrowed because there was an imbalance between receipts and payments. That is accommodating transaction. The need for accommodating transaction arises when the autonomous payments and receipts are not equal. If they are already equal, no need for that accommodation. So whatever be the accommodating transaction, that can be interpreted as balance of payment, deficit or surplus. There is another way to read that BOP deficit, and वो ज़्यादा easy है. Any exchange of foreign exchange flow will be always through RBI. So if we export goods, you get payment in terms of dollar, but that dollar is being retained by RBI, and RBI convert it into rupees. And if you have to make payment, then the payment outside will be in terms of dollar, but you give rupee to RBI, take dollar, and then dollar will flow outside. So any flow of foreign currency is always through central bank. So if I say that on 1st of April 2017, Central Bank of India has a foreign exchange reserve, and that foreign exchange reserve was of $100, and on 31st of March 2018, RBI has foreign exchange reserve, but that reserve is just $80. So from this information, what you can interpret? On 1st of April, RBI was having a reserve of $100. On year end, it left with a reserve of only 20, which means what?
over this period outflow was more and inflow was, and how much more? So that 20 is deficit. So if RBI central bank reserve decreases, if central bank's reserve decreases, it means there is deficit, and if reserve increases, it means surplus. So we can read that surplus or deficit by observing the reserve left with the central bank. So simply आपको यहाँ पे you don't have to prepare that balance of payment. Remember we are discussing this balance of payment because now in addition to an internal balance we have to make a external balance also. And what was the meaning of internal and what is external? By the intersection of IS and LM curve we determine equilibrium of economy. But was it that internal or external? वो इंटरनल था, वो तो क्लोज इकोनॉमी के लिए पढ़ा था हमने. दैट वाज द टॉपिक फॉर क्लोज इकोनॉमी. सो दैट कंसेप्ट वाज फॉर क्लोज इकोनॉमी. सो दैट वाज इंटरनल बैलेंस, एंड इन एडिशन टू दैट इंटरनल नाउ यू हैव टू मेंटेन external balance as well. So what does external balance require? External balance require basically balance of payment, balance of payment का information. तो बेसिक जो पॉइंट्स है ये क्वेश्चन के लिए कहीं नहीं आ रहा, जस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रेस्ट में होना चाहिए वो लिख लेना. बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग में इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ transactions of residents of country, transactions of residents of a country with residents of rest of world, during an accounting period. There are two main accounts in BOP. Two main accounts in BOP. That is current account and capital account. Current account records trade in goods and services. Current account records trade in goods and services as well as transfer payment and investment income. On the other hand, capital account records sale and purchase of assets like land, bond, etc. नेक्स्ट पैराग्राफ में लैंड, बॉन्ड एटसेट्रा. मतलब बॉन्ड परचेज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट है, बट ऑन दैट बॉन्ड व्हेन यू गेट रिटर्न वो करंट अकाउंट है. परचेज ऑफ लैंड वो एसेट हो गया, बट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट व्हेन यू गेट इनकम देन इट बिकम्स करंट अकाउंट. नेक्स्ट पैराग्राफ में इफ देयर विल बी डेफिसिट इन BOP, then
foreign exchange reserve, if there will be deficit in BOP, then foreign exchange reserve with central bank, foreign exchange reserve with central bank will decrease. Foreign exchange reserve with central bank will decrease. However, in the case of surplus, foreign exchange reserve will increase. In the case of surplus, foreign exchange reserve will increase. Remember, now you have to deal with two type of currency. One is domestic currency and the other is foreign currency, and the rate at which domestic currency will be converted into foreign currency will be known as exchange rate. And how to determine that exchange rate? Two methods. One is fixed, other is flexible. So first, what is the meaning of fixed exchange rate? Meaning of fixed exchange rate. In fixed exchange rate system, central bank stands ready to buy and sell. Central bank stands ready to buy and sell foreign currency. Stands ready to buy and sell foreign currency at a fixed rate. It works like support price system. In which central bank makes a commitment. To buy and sell foreign currency. Central bank makes a commitment to buy and sell foreign currency at a fixed rate. However, in this system, central bank must have foreign exchange reserve available. Central bank must have foreign exchange reserve available. In order to keep exchange rate fixed. But when a country has continuous deficit in BOP, when a country has continuous deficit in BOP, then central bank will run out of reserve. And it will be unable to intervene in foreign exchange market.
अनएबल टू इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं होगा. इट विल बी अनएबल टू इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. जरा पहले यहाँ समझ लेंगे. इफ एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल you write exchange rate always as how many unit of domestic currency per unit of foreign currency. लिखने का तरीका ये रहेगा हमेशा. So when you say exchange rate is rupees 72 or 73 per $1, so always add exchange rate in that for how many unit of domestic currency per unit of foreign currency. Now if I say exchange rate system is fixed, then who is keeping it fixed? Central bank. So if central bank keep exchange rate constant, कोई भी रेट हो जहाँ पे उसने constant कर रखा है, so how central bank will be able to keep it constant? How central bank is able to keep it constant? Because according to that balance of payment, there are always inflow and outflow. Receipts और payment में हमेशा imbalance बना रहेगा. The receipt side is basically supply of foreign currency and the payment side is demand for that foreign currency. So if payment is more and supply is less, receipts are less because there is a deficit. So if there is a deficit, then if there is a deficit, it means demand for dollar is more and supply of dollar is. So who will keep, who will bridge this gap? RBI. So when RBI will bridge this gap, the impact on RBI's reserve will, सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व होगा तभी तो इंटरवीन करेगी, तभी तो सेल करे. RBI cannot print dollar, RBI can print rupee. So if RBI is having a reserve of, let us say RBI was having a reserve of say $1,000. So in 1 year there was more demand for dollar as compared to supply. So RBI will sell out of that and keep that rate constant. But if RBI is doing it, then reserve available with RBI will reduce. If that happens subsequent year, then again RBI will intervene. Again RBI reserve will reduce. तो अगर मान लेते हैं कि आरबीआई ने कोई रेट फिक्स कर रखा है कि 50 रुपीज़ पर डॉलर होगा, तो 2007-8 50 रुपीज़ रखा, 8-9 वो भी 50 रखा, 10-11 वो भी 50 रखा, but every year there was a deficit. So this reserve will, so if this reserve get exhausted, then RBI cannot intervene. When RBI cannot intervene, RBI cannot keep that rate constant. फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. फिर RBI will be forced to change this rate. So if there is a decline of reserve, then RBI will be forced to increase that exchange rate from rupees 50 to say 60 per dollar. But if RBI is doing it, you will call it devaluation of currency. So earlier it was held constant at, now it is being held constant at, ये भी फिक्स है बट पहले वो 50 पे फिक्स था, अब ये 60 पे फिक्स हो गया. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बाय इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट? नाउ अर्लियर यू required 50 rupees to buy $1. Now you require 60 rupees to buy $1. So dollar becomes expensive. So the demand for dollar will reduce. Demand for dollar will reduce, and thereby you will be able to maintain a balance. So remember, under fixed exchange rate model, the problem was as and when RBI reserve decreases, RBI was always forced to devalue the currency. उसे बार बार करेंसी को क्या करना होता था? डिवैल्यूएशन करना. तो डिवैल्यूएशन एज अ वर्ड आप यूज करेंगे ओनली अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट. बट रिसेंटली ऑल्सो रुपीज, बट वाई यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन and not devaluation? Because the system is flexible. So under fixed exchange rate you will use devaluation, and under flexible depreciation over. Fixed exchange rate is by central bank and flexible exchange rate determined by market forces. ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट मीनिंग क्लियर है, बिकॉज यू हैव टू डील विद बोथ. क्वेश्चन में भी दोनों दिए जाएंगे.
फिक्स एक्सचेंज रेट में हाउ इकोनॉमी वर्क्स, फ्लेक्सिबल में हाउ इकोनॉमी विल वर्क. विच पॉलिसी विल बी इफेक्टिव अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल, विच पॉलिसी विल बी इफेक्टिव अंडर flexible exchange rate model. We have to again examine monetary policy and fiscal policy. So one exchange rate was this. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जब ये फिक्स से रखना था तो why not RBI keep it ₹1 $1? ऐसा क्यों नहीं रखा? फिक्स से जब करना है तो कहीं भी फिक्स कर दो, या कुछ इकोनॉमिक लॉजिक होंगे उसके पीछे, रीजन होगा उसके पीछे. ठीक है, तो why rupee is equivalent to 73 per dollar? Why not more? Why not less? So there must be some reason why rupee is continuously sliding against dollar. अगर आप खुद रिकॉल करो कि आज से 10 साल पहले अगर आप अवेयर हो तो इट यूज्ड टू बी एट व्हाट वैल्यू, याद है कुछ? कब से याद है? 50 से याद है? 40 से? जितना पुराना बोलोगे उससे आपकी एज का इंफॉर्मेशन लगता जाएगा. 50 60, मुझे तो 16 रुपीज से याद है. $1 यूज टू बी इक्वलेंट टू 16 रुपीज. $1 इक्वलेंट टू 16 रुपीज. बट नाउ 16 हैज गॉन अप टू 72 73. So open economy में you will get exact information why it is continue to slide and what will be after 5 year or after 10 year. वो जो इकोनॉमिक लॉजिक है वो फंडामेंटल जो 80s और 90s के डेकेड में होगा वो अभी भी है. तो जो कुछ इकोनॉमिक लॉजिक है उसकी वजह से वो हमेशा डिप्रिसिएट कर रहा है. सो व्हाट आर द रीजन वाई वन करेंसी डेप्रिसिएट एंड द अदर करेंसी अप्रिसिएट, वो सारा ओपन इकोनॉमी के अंदर क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एक्सप्लेन द सेकंड फॉर्म, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट flexible exchange rate. In this system central bank allow exchange rate to adjust. In this system central bank allow exchange rate to adjust. Central bank allow exchange rate to adjust to equate supply and demand, to equate supply and demand for foreign currency, to equate supply and demand for foreign currency. It is also known as floating exchange rate. It is also known as floating exchange rate. In a system of clean floating, in a system of clean floating, central bank allow exchange rate to be freely determined. Central bank allow exchange rate to be freely determined in foreign exchange market, to be freely determined in foreign exchange market, to be freely determined in foreign exchange market. So what is the meaning of clean floating? Clean floating का मतलब है central bank will never intervene in the market whatever be the exchange rate. अब आप ये बताओ क्या सही में अगर लेबर का डॉलर का डिमांड ज़्यादा है और डॉलर का सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली डॉलर विल अप्रिसिएट एंड रुपी विल कंटिन्यू टू डेप्रिसिएट.
but if rupee is depreciating and it may be depreciating at a very fast pace also. तो if rupee is depreciating at a very fast pace, क्या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी? क्लीन फ्लोटिंग में कहते हैं कि नहीं करेगी. सेंट्रल बैंक विल लीव दैट एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. बट प्रैक्टिकली क्या होता है? इफ इट इज स्लाइडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस देन आरबीआई विल यूज इट्स रिजर्व. वो अपने रिजर्व का एक पार्ट मार्केट में सेल कर देगा. अगर मार्केट में सेल किया तो उसने एक्चुअल में डॉलर का सप्लाई और सप्लाई बढ़ा करके वो एक्सचेंज रेट को मैनेज कर लेगा. ऑल्दो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, नॉट फिक्स बाय द आरबीआई, बट इट कुड बी मैनिपुलेटेड बाय आरबीआई. एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड? बाय सेलिंग और बाय बाइंग. तो एक्चुअली द सिस्टम इज नेवर क्लीन. द सिस्टम इज जनरली dirty. So it is dirty floating which prevails. In practice जो exchange rate होता है वो dirty floating का होता है. Next paragraph में. In practice exchange rate system is dirty floating. Dirty floating को managed floating भी कहते हैं. Managed floating. In this system, central bank will intervene in foreign exchange market. Central bank will intervene in foreign exchange market. Central bank will intervene in foreign exchange market in an attempt to influence exchange rate. In an attempt to influence exchange rate. नेक्स्ट पैराग्राफ में दो टर्म लिखेंगे. डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट पैराग्राफ. Domestic currency depreciates under flexible exchange rate. Domestic currency depreciates under flexible exchange rate system. Under flexible exchange rate system, when it becomes less expensive. When it becomes less expensive in terms of foreign currency. In terms of foreign currency. Less expensive in terms of foreign currency. On the other hand, devaluation takes place under fixed exchange rate. Devaluation takes place under fixed exchange rate system. Devaluation takes place under fixed exchange rate system. In which price of foreign currencies increased by official action. Price of foreign currencies increased by official action. Price of foreign currencies increased by official action. So basically devaluation is official and depreciation is by market forces. और कोई डिफरेंस डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में? ये फिक्स में होगा, ये फ्लेक्सिबल में होगा. वैसे मीनिंग दोनों का एक ही है. इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज यू कॉल इट डेप्रिसिएशन. 50 to 60 हो रहा है, 70 to 80 होगा, ये डेप्रिसिएशन है. सो इंक्रीज ऑफ एक्सचेंज रेट इज depreciation and increase of exchange rate is also devaluation, but one increase caused by market forces, other increase caused by the government. Any other difference apart from this? दूसरा important difference याद रखेंगे, depreciation is always
with respect to one currency, and devaluation is generally with respect to all currencies. When rupee will be devalued, it will be devalued with respect to dollar, with respect to yen, with respect to euro. But it is possible that rupee is depreciating against dollar, but on same day rupee may be appreciating against yen. So depreciation is always with respect to one currency, and devaluation is always with respect to all the foreign currencies. Next basic term में real exchange rate. Real exchange rate. Next term is real exchange rate. It measures countries' competitiveness. It measures countries' competitiveness in international trade. Countries' competitiveness in international trade. Countries' competitiveness in international trade. It also measures relative purchasing power. Relative purchasing power of two currencies. Relative purchasing power of two currencies. Full stop. Two currencies are at purchasing power parity. Triple P. Two currencies are at purchasing power parity. Purchasing power parity when a unit of domestic currency can purchase same basket of good in home country or abroad. Same basket of good in home country or abroad. Same basket of good in home country and abroad. जरा इस टर्म को ध्यान से सुनिएगा. रियल एक्सचेंज रेट को आर से डिनोट कर रहे हैं. नॉमिनल ई लिखा है इनटू फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस है, पी एफ अपॉन पी. नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट आप पेपर में देख रहे हो वो एक्सचेंज रेट नॉमिनल होता है या रियल होता है? ऐसे 70 पर डॉलर, 72 पर डॉलर, इट इज नॉमिनल. एंड व्हाट इज रियल? व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? रियल एक्चुअल में रियल कोई भी टर्म इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट होता है, परचेजिंग पावर. सो आई गिव वन स्मॉल एग्जांपल. सपोज consider a basket of good in India and take same basket of good in US. So if in order to buy, suppose this basket contains only 1 unit of coke here and 1 unit of coke here. Price of that coke in India is say 50 and price of same coke in US is $1. So purchasing power of 50 rupees in India and purchasing power of $1 in US is same. So what must be exchange rate then? Rupees 50 per $1. ठीक है? Now if I say there is inflation in India, so price will rise then. So simplify करने के लिए if I consider that there is inflation in India by 10%, मतलब ये जो प्राइस है ये 10% से बढ़ रहा है इंडिया में, तो प्राइस 10% से बढ़ गया, दैट मीन्स इट विल बी नाउ हैविंग अ प्राइस ऑफ 55 and suppose there is no inflation in US, so it is still cost. So now purchasing power of 55 rupees and purchasing power of $1 is
same. So what must be exchange rate now? रुपीज 55 पर डॉलर. ये 55 पर डॉलर हो गया. अर्लियर इट वाज 50. वेदर दिस चेंज इज नॉमिनल और रियल. एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है, 50 to 55 हो गया है. इज इट रियल चेंज और नॉमिनल चेंज? रियल तो फिजिकल क्वांटिटी 1 कोक स्टिल वही है. व्हाट इज द रियल चेंज? द चेंज इज ओनली nominal, because still the purchasing power of that 55 rupees is equivalent to that $1. Remember, as you increase this P, this nominal exchange rate increases in the same proportion. तो कितने का इन्फ्लेशन था? एक्सचेंज रेट कितने से बढ़ा है? तो अगर ये P और E दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ गया, देन R रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो दो, अब जरा दूसरा एग्जांपल समझना. If I say that there is inflation in India of 10% and consider that there is same rate of inflation in US also, same rate of inflation, तो अब same rate of inflation के बेस पे बताना क्या होगा? If there is same rate of inflation in US, then if earlier it was $1, now it will be $1.1. So purchasing power of 55 rupees is equivalent to what? $1.1. So purchasing power of 50 rupees is equal to, if purchasing power of 55 is equal to 1.1, then purchasing power of 50 will be equal to, that means exchange rate will remain same. But when exchange rate remains same? Exchange rate remains same when inflation in both countries are at same rate. तो अगर ये P और फॉरेन कंट्री का प्राइस ये दोनों सेम रेट से बढ़ गया, फिर ये ई चेंज नहीं होगा. तो अब एटलीस्ट वन फैक्टर आप बता सकते हो कि वाई रुपी इज डेप्रिसिएटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मोर एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन इन यूएस. सो द परचेजिंग पावर ऑफ दिस करेंसी इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट. देयर कुड बी अदर रीजन्स, बट वन रीजन इज दिस. तो रिमेंबर, जब कभी आप एक्सचेंज रेट क्रिएट करेंगे, रिमेंबर ये दो फैक्टर हैं. One is real and the other is nominal. So real is equal to nominal into foreign price upon domestic price. Nominal into foreign price upon domestic price करना. ठीक है. एक टॉपिक इसके अलावा कर लीजिएगा, ट्रेड इन गुड्स. ट्रेड इन गुड्स comma market equilibrium and balance of trade. यहाँ पे मैं एक्चुअल में IS कर्व का इक्वेशन लिख रहा हूँ. आप रिकॉल करके सिर्फ ये बताओगे IS कर्व पे क्या इक्वेट होता है. ऑन IS कर्व, I for income, S for spending. So income is equal to spending. Which is spending? Is it spending by domestic resident or is it spending on domestic good? कौन सा spending? Because economy open है अब, so the question becomes relevant. So is it spending by domestic resident or is it spending on domestic good? It is spending on domestic good because this is domestic income. So in place of that domestic income you can write GDP or you can write Y also simply. Now question is spending on domestic good, the goods domestically produced, who is buying those goods? Goods domestically produced in India, who is buying? जो buy करेगा उसके spending होगी उस पे. So who is buying those goods? Household, firms, government, foreigners. They could be also buying our goods. But as a domestic resident, we do not buy only domestic good. We buy domestic good as well as foreign goods. But we have to write here what? Spending on. तो यहाँ पे clearly जरा separate कर लेंगे कि when I say consumption, it means purchase of domestic good plus purchase of foreign goods दोनों होता है. But here to be precise, you write only purchase of domestic good.
Similarly, when firms make investment, they buy domestic machinery and they can also buy foreign machinery. So here you will write only purchase of domestic one. Government purchase of domestic goods, but government can also purchase domestic and foreign goods. And who else? Foreigners. But if foreigners are buying our goods, it is export. So then you go on to say that what is the CD? CD की वैल्यू आप वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. CD is nothing but C minus CF and ID is I minus IF. GD is G minus GF plus export. So this becomes Y equal to C plus I plus G plus X minus CF minus IF minus GF. और जितने भी परचेज हैं फॉरेन गुड्स के उनको कलेक्टिवली सबट्रैक्ट कर लेंगे. सो इट बिकम्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ये पूरा टर्म इंपोर्ट कर लो. और अब से आप a प्लस एन एक्स के फॉर्म में लिख देना. a फॉर दिस कंप्लीट टर्म c प्लस आई प्लस जी and x minus m is nx. So what is c plus I plus g plus x minus m? It is spending on. And what is just c plus I plus g? What is a? What is the c plus I plus g? ये c plus I plus g है spending by domestic resident. और C plus I plus G plus X minus M is spending on domestic good है, because domestic resident is household or firm or government. तो this C plus I plus G is spending by domestic resident and C plus I plus G plus X minus M is spending on domestic good. Now in book it will be written as this A depends upon what? जो फैक्टर है वो यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस नेट एक्सपोर्ट. It depends upon some factors. So recall करके बताना, consumption is a function of income. Income से disposable income निकालते हैं, तो it is a function of income. That investment is a function of rate of interest. So you write rate of interest here. Generally we consider government expenditure as autonomous. So the factors which determine A are income and interest rate. Then what determine net export? Net export depends upon, net export means export and import. So that net export depends upon, recall करके बताना, import का function ISR में लिखते थे m bar plus small m by करके. That means import is a function of income. So import is a function of income. That means as our income increases we buy more goods. And we buy more of domestic good as well as more of foreign goods. Similarly, as income in foreign country will increase, they will also buy more of foreign goods. But their purchase of foreign good is nothing but export. तो डोमेस्टिक कंट्री का इनकम बढ़ेगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंपोर्ट बढ़ेगा, और फॉरेन कंट्री का इनकम बढ़ा तो आवर एक्सपोर्ट विल राइज. As foreign country income increases, they will import more, but their import means our export. And the third factor on which net export will depend is real exchange rate, and that real is nominal into foreign price domestic price. So this is the modified IS curve equation. ये अब आपने मॉडिफाई करके IS कर्व का इक्वेशन लिख दिया. IS कर्व का इक्वेशन लिखते समय in this chapter you have to say y is equal to a and then net export, which is a function of ठीक है. ये IS कर्व का नया इक्वेशन है. आप सिर्फ ये बताओ IS कर्व ड्रॉ करते समय एक्सेस पे क्या लिखते हैं हम? When you draw IS कर्व, what do you write on axis? One interest rate, other income.
बट इन दिस इक्वेशन देयर आर मेनी वेरिएबल्स। यहाँ तो बहुत सारे वेरिएबल लिए हैं, उनमें से कौन से वेरिएबल प्लॉट किया? सिर्फ 2 लिख दिया एक्सेस पे, तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट मान लेंगे। एंड बेस्ड अपॉन दैट यू ड्रॉ आईएस कर्व। क्या ओपन इकोनॉमी का आईएस कर्व और क्लोज इकोनॉमी का आईएस कर्व सेम होगा? मैंने 2 आईएस कर्व यहां ड्रॉ किया, ये भी नेगेटिव है। आप सोच के बताओ इनमें से कौन सा ओपन इकोनॉमी का है? विच वन इज फॉर ओपन इकोनॉमी, 1 और 2? स्लोप याद है आईएस कर्व का? स्लोप ऑफ आईएस कर्व, व्हेन यू डिटरमाइन स्लोप ऑफ आईएस कर्व, स्लोप ऑफ आईएस कर्व होता था -1 अपॉन अल्फा जी इंटू बी, वेयर अल्फा जी वॉज मल्टीप्लायर विच वॉज 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी। आप इतना ही लिखोगे मल्टीप्लायर इफ इकोनॉमी इज क्लोज्ड, बट द सेम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 1 by 1 minus c plus ct plus m when that economy is open। तो बताना किस इकोनॉमी का मल्टीप्लायर ग्रेटर है? फिर इन ओपन इकोनॉमी यू आर एडिंग हियर m, डिनोमिनेटर में ऐड किया तो वैल्यू छोटी हो गई। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज लेस, क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज, एंड विथ मल्टीप्लायर स्लोप इज इनवर्सली रिलेटेड। सो if in an open economy value of multiplier is less, then slope in an open economy will be more, that means line will be steeper. So IS1 is for open economy, 2 for closed economy, 1 for open, 2 for closed। ठीक है, पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। स्लोप ऑफ IS curve depends upon multiplier and B, and the value of multiplier does not remain same in both countries, both case, close and for open economy। अब आगे 1-2 पॉइंट सिर्फ लास्ट में बताएंगे। when IS curve shifts, जो कर्व आपने क्लोज का बनाओ या ओपन का बनाओ, से बताएंगे when this curve will shift। तो नॉर्मली IS कर्व कब शिफ्ट होता था? ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस ट्रांसफर, ऑटोनॉमस टैक्स। तो जो फैक्टर आपने पहले तक कर रखा है वो तो है अपनी जगह। व्हाट एडिशनल फैक्टर यू फाइंड हियर? एडिशनल फैक्टर बताना क्या लिख रहे हैं जो सेम 2 में नहीं लिखा था। अब एडिशनल क्या दिख रहा है आपको? एडिशनल ये वाला फैक्टर आ गया। तो आप बता पाओगे कि व्हेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, इन विच डायरेक्शन दिस कर्व विल शिफ्ट? सोच के बताना। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है तो IS कर्व विल शिफ्ट टू द राइट और टू द लेफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट इंक्रीज? Increase means if earlier it was say 60 per dollar, now that rate has gone up to be 70 per dollar. So with this change, what is the effect on net export? Import becomes expensive, exports cheaper, so import will reduce. So as exchange rate will increase, net export will increase, and with increase in net export, IS curve will shift right side. What is the effect of increase in price? प्राइस इंक्रीज का क्या इफेक्ट होगा? प्राइस डोमेस्टिकली बढ़ रहा है, so as price increases domestically, domestic goods becomes expensive. So when domestic goods becomes expensive, our export will decrease, and rather we will prefer to buy more of foreign goods. So what is the effect on net export? Domestic goods expensive हो गए, so net export will fall and IS curve will shift to the left. What is the effect of foreign price increase? Foreign price increase. Effect of foreign price increase. Foreign goods becomes expensive now, so there will be more demand for domestic goods. So net export will increase and it will shift to the right.
Remember, while studying open economy, you have to add certain factors. जहाँ तक कर रखा है ये स्लैब में, अगर आप बुक को रिकॉल करो तो सेम 2 was चैप्टर नंबर 3 इनकम एंड स्पेंडिंग, वो भी डॉन बुश का था. चैप्टर नंबर 4 was मनी इंटरेस्ट एंड इनकम विच एक्सप्लेन आईएएस का वैल्यूम कब. चैप्टर 5 was मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6. कंटिन्यूटी यही है. 3, 4, 5 जो वहाँ पढ़ा था उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे है. चैप्टर नंबर 6 आप वही सेम बुक का पढ़ रहे हैं, तो सेम फॉर्मेट में लिखते जाना. तो आईएएस कर्व का जो स्लोप होगा, पहली बात वो अलग है. एंड द फैक्टर्स विच विल कॉज शिफ्ट, दीज आर नॉट फॉर क्वेश्चन व्यू. आपको सिर्फ वो रेफरेंस में याद रखना है कि इन व्हाट हाउ इट विल बी अफेक्टेड. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम. अब मेनली दिस क्वेश्चन chapter will be used in order to explain with for a larger question, and that question will be Mundell-Fleming मॉडल. ठीक है, तो नेक्स्ट में ये मॉडल पे एक्सप्लेन कर लेंगे. चैप्टर के अंदर मेनली पार्ट ये होना है. नेक्स्ट विल बी दिस